Hello friends, great morning. So today we'll be learning about the structure and function of proteins. So till now we have learned about carbohydrates, their digestion, absorption and metabolism. Then classification of carbohydrates also we have done. Then fats ka again we have done the classification, their digestion, absorption and metabolism. Okay. So today we'll be doing the same under the same aspects. We will be learning about the proteins. सो आजकल अगर आप देखोगे तो प्रोटीन्स को बहुत ज़्यादा वेट लॉस के रेजिमेन में या फिर इन ऑर्डर टू बूस्ट इम्यूनिटी प्रोटीन्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. Likely it is very true that proteins are essential to your body. So let us first understand why proteins are essential to your body and what is the function of protein in your body. Okay. So it is not only one factor that is protein in our that the proteins are required in our body. Let's say कि body building के लिए proteins की ज़रूरत होती है. Yes, definitely. But apart from that, there are so many other aspects in our body happening that one second. So we are needing proteins in our diet in on day to day basis. Okay. So ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन आपने proteins ले लिए and then next day you don't take it and the proteins that you have taken the previous day, they will be utilized for the function of the next day. That is because every time there is wear and tear of tissues, every time these tissues need to be replaced with some kind of high biological value protein. So all these things we will be learning in this lecture. So what are proteins? So proteins, these are basically the nitrogenous compounds in our body. ठीक है. नाइट्रोजन जब मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है, जैसे मैंने आपको फैट्स का बताया था कि when glycerol is attached to the carbon, hydrogen, oxygen molecules, then fat molecule is being formed. So there are in like different types of fat molecules like triglycerides, cholesterol. So they are varying in their chemical composition and hence they are named differently, right? So वैसे ही proteins भी अलग अलग substances से बन रहे हैं and these substances are called as amino acids. Okay. So many amino acids are coming together to form a particular type of protein. Why I am saying particular type of protein? Because a muscle protein will be different. A protein that is required for formation of enzymes, that will be different. A protein that is required for formation of, let's say, hormone, so that is different. So there are different types of protein based on their chemical structure. They will be providing us the particular function. Okay. So to start with that protein structure, if you see here, I have put up protein structure. This is the basic structure of protein and we can understand that there are n number of amino acids bonded together to form a protein molecule. So यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अलग अलग amino acids मैंने बताया है, like thiamine, then we have guanine, cytosine, adenine. So these are all amino acids which are bound together by the strands. Okay. And then a protein molecule is being made. So ये अलग अलग amino acids आते हैं. Okay. And they make a protein molecule. Okay. So now classification of protein. When we want to learn the classification of protein, we must understand what amino acids are. Okay. So amino acids are again a nitrogenous compounds that they are, but they are incomplete. That each and every amino acid will not provide a specific function to your body. It needs to be supplemented or complemented by some another amino acid. They come together to form a protein molecule and then they serve the function in our body. So proteins are made up of amino acids. These amino acids are classified into essential amino acids and non-essential amino acids. So जैसे आपको याद होगा कि जैसे हमने फैट्स के बारे में देखा था, राइट? So fats के बारे में हमने क्या देखा था कि when like there are two kinds of polyunsaturated fats, essential fatty acids and non-essential. So वैसे ही some amino acids, they are essential and they are non-essential. So essential amino acids, they must be essentially taken through the diet from like in diet. So they are called as essential because otherwise see, अगर हम लोगों की बॉडी कोई कंपाउंड बना रही है, वी आर नॉट अवेयर कि वो कंपाउंड हमारे बॉडी में बन रहा है, इट इज गेटिंग यूटिलाइज, इट इज गेटिंग एक्सक्रीटेड, वट एवर इट इज.
right? So they are not essential for us, that so they are essential for body functions, लेकिन ये हमें पता नहीं है कि वो essential है, because body itself is preparing them. Why it is called as essential amino acids? Because these amino acids, they need to be compulsory taken through our diet, so they are called as essential amino acids. So these amino acids are to in all total 10 amino acids which are essential. So they are methionine, isoleucine, leucine, lysine, threonine, tryptophan, valine, phenylalanine, histidine, arginine. Okay, so these are all essential amino acids. There are non-essential amino acids. They should not be taken through diet. They can be found inside our body itself. So they are called as non-essential amino acids. So they are cysteine. Cysteine, there are two types of cysteine. So one is TINE, cysteine, and the other is TEINE, cysteine. Okay. So then proline, glycine, serine, alanine, aspartic acid, glutamine, and tyrosine. So these are some non-essential amino acids. So these are, though they are non-essential, but that doesn't mean that they are not essential for our body. For example, if you see tyrosine, okay, then it has role in formation of melanin pigment. Okay, if you see alanine, it has a role in formation of our muscle tissue. Then we have glycine, protein. So all these amino acids, they are taking part in some or the other metabolic processes, but they are produced in our body, so they are called as non-essential amino acids. Now essential amino acids, they need to be taken through the diet, and they are must. There is no replacement to it. Okay, so they are called as essential amino acids. Okay, now let us understand what is high biological value protein. Okay, so when there would be more than or equal to 9 essential amino acids, when a protein molecule is made up of at least 9 essential amino acids, there should be 10, but at least there should be 9, then we say that this particular molecule is a high biological value protein. Because एक प्रोटीन बनाने के लिए ना it has to have a certain maximum number of essential amino acids. So when a protein is said to be high biological value, when there will be at least 9 essential amino acids to form a good and good quality protein molecule. Now what is a high biological value protein? Okay, so what is a why do we need high biological value protein? So high biological value protein is a protein molecule that can be easily digested, easily absorbed, okay, and will be utilized for its function in an effective way. That is a high biological value protein. ठीक है, ऐसा प्रोटीन कि जो आसानी से उसका डाइजेशन हो सकता है, उसके उन अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब होने के बाद में दे विल, वो अमीनो एसिड्स एक अच्छे काम के लिए, एक क्वालिटी प्रोटीन बॉडी में बनाने के लिए उसका वो यूटिलाइज हो सकते हैं. दैट इज कॉल्ड एज द हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन. ओके, सो ये दोनों चीज़ें आपको भूलनी नहीं है. एक तो इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स, ये याद रखो. व्हाट आर इसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड व्हाट आर डिफरेंटली नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स. कौन से इसेंशियल अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन, ये आपको चीज़ें याद रखनी है. Okay, now these essential amino acids, they have different functions. Like for example, leucine, lysine, and isoleucine, they are good for muscle building. Okay, tryptophan is required for functioning of pyridoxine. Okay, so tryptophan is a precursor of pyridoxine. So pyridoxine ये जो B complex vitamin का एक vitamin है, right? So that to form that vitamin, you will require tryptophan. Okay, so we have valine, phenylalanine. Phenylalanine is again important for your kidney function. ठीक है, अगर ये अमीनो एसिड्स, इफ देर इज सर्टन डिसऑर्डर कि जिसमें ये phenylalanine it is not getting processed, then the person can land up into different kind of metabolic disorder. Okay, वो भी हम लोग सीखेंगे आगे. Then you have histidine and arginine. So arginine, if you would have heard, it is very essential amino acid for your hair growth and to maintain the quality of your hair. Okay, so these are all essential amino acids. Even methionine, it is taking part in certain metabolic processes. So all these essential amino acids, they are necessary to your body.
and you can go through the books and read the function of these essential amino acids कि जो बुक मैं आपको अभी मैंने जो रेफर की है उस बुक में से आप ये इनके फंक्शंस आप थोड़ा पढ़ सकते हो. ओके, नाउ yes, so now we'll be learning as to how the proteins are being classified. Oh, I'm sorry, one second, कहाँ चला गया? अरे एक मिनट. Okay, now this was the classification of protein. Now let's understand the classification. वो essential amino acids का classification था. Now let us understand the classification of proteins. Now proteins are again classified into complete protein and an incomplete protein. Okay, so what is a complete protein? Complete, the name itself suggests that it is a complete protein. It does not require any other molecule to help itself to do its function. ठीक है, that is a complete molecule, that is a complete protein. So what is a complete protein? These protein contain all essential amino acids in a sufficient quantity and ratio to supply body's needs. Okay, in a sufficient quantity. क्या चाहिए? All essential amino acids. ठीक है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स बहुत अच्छे क्वांटिटी में चाहिए सो दैट बॉडी की जो नीड है उस टिश्यू की जो फंक्शन है वो अच्छी तरीके से हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल लाइक फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम. ठीक है, एक एंजाइम फॉर्म होने के लिए अगर आपको 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स चाहिए, तो अगर आप अपनी डाइट में you are taking all essential amino acids in a proper way, then that enzyme will be formed in such a way that it will perform its function to its 100%. Okay, so that is a complete protein which contains at least 9 essential amino acids. Okay, so they are also called as a high biological value protein. So मैंने जो अभी बताया था आपको high biological value, so it is that. Okay, now these proteins are animal origin. So maximum complete proteins जो high biological value protein है that is animal derived. इतना ही याद रखो. ठीक है, so animal derived, so it can be anything. एनिमल डिराइव में क्या होता है हमारा चिकन, मीट, फिश, ऑल नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज लाइक प्रॉन्स, ये सारा जो नॉन वेजिटेरियन फूड्स है वो. ओके, एंड मिल्क ऑल्सो बिकॉज मिल्क इज ऑल्सो डिराइव्ड, मिल्क इज ऑल्सो एन एनिमल प्रोडक्ट. सो जो कुछ मिल्क में प्रोटीन्स है दे आर ऑल हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन. राइट, सो इसमें अभी किसमें कितना है प्रोटीन दैट वी विल बी लर्निंग इन द फर्दर क्लासेस, लेकिन अभी के लिए इतना आप समझ लो. टू फॉर्म अ कंप्लीट प्रोटीन यू रिक्वायर ऑल दी एटलीस्ट 9 essential amino acids, and these essential amino acids are present in the muscles of all different animals, or you can see an animal product. Now अभी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, will ghee contain a complete protein? Just think, घी में घी कंप्लीट प्रोटीन रहेगा क्या? नो, बिकॉज घी कंटेन्स ऑल फैट्स और एनीथिंग दैट इज एनिमल डिराइव फैट लाइक बटर फॉर एग्जाम्पल. मिल्क से हमें बटर भी मिलता है. सो बटर कंटेन्स ऑल फैट्स, इट डजंट हैव प्रोटीन ओनली, right? So that has nothing to do with the complete and incomplete protein because that product itself does not contain any amount of protein. Okay, प्रोटीन्स हैव हम लोग कब क्लासिफाई करेंगे कि जब उस फूड में प्रोटीन रहेंगे तब उसका क्लासिफिकेशन होगा. ओके, नाउ इनकम्प्लीट प्रोटीन्स. Yes, now incomplete proteins. Now these proteins are deficient in one or more essential amino acids, hence do not support life on their own. ठीक है, यहाँ पे ये सेंटेंस का मतलब क्या है कि these proteins are deficient in one or more essential amino acids. Let's say कि हमने क्या बोला था कि minimum 9 essential amino acids चाहिए, उसमें एक भी essential amino acid कम हो गया ना तो it will not support life. It will take help of another protein to do its function. These are incomplete protein. The name itself suggests that these are incomplete proteins. Okay, so they are obtained from the plant sources. So plants में okay जो कोई प्रोटीन है so they are all incomplete proteins, but they still have some function to do in our body. So अभी ऐसा नहीं है कि एनिमल प्रोटीन खाते जाओ.
एंड जो एनिमल प्रोटीन खा रहा है वही सिर्फ हेल्दी है. इट इज नॉट लाइक दैट. विल कम टू इट नाउ. सो किस में प्रोटीन्स रहते हैं? वेजिटेबल्स में, पल्सेस, लेग्यूम्स, सीरियल्स, नट्स. सो ऑल दीज जो फूड ग्रुप्स है उनमें कुछ ना कुछ तो प्रोटीन्स रहेंगे. सो इफ यू सी इन लाइक वेजिटेबल्स में, लाइक ब्रोकोली है, मेथी है, इनमें कुछ ना कुछ तो प्रोटीन रहेगा. So though it is an non, they will contain incomplete protein, but these protein complete themselves when other essential amino acids we are taking in our diet. Okay, let's say for example pulses and legumes. So pulses and legumes, सारे pulses and legumes, they are incomplete proteins only. Agree, but if you mix all the pulses together and you make a flour out of it, okay. So let's say तुअर दाल है, उसमें कुछ let's say 3 or 4 essential amino acids है. मूंग दाल है, दैट कंटेन्स सम 2 or 3 एसेंशियल अमीनो एसिड्स. मसूर दाल है, उसमें कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स है. ये तीनों दाल्स आपने एक साथ कर दी और वो उसकी दाल बनाकर आपने खा ली, या फिर उसकी रेसिपी कुछ बना के आपने खा ली. You are going to your body is still going to prepare that complete protein in your body, because all essential amino acids, they are coming together, though maybe from the different sources, but they are coming together and forming a complete molecule, that is complete protein in your body. Okay, so जो vegetarian लोग हैं, ऐसा नहीं है कि they are not eating complete proteins. They are eating complete proteins if they are combining different pulses and legumes together and making a recipe out of it. Okay, so in this way we can, though we are consuming incomplete protein, a complete protein will be formed in our body once all essential amino acids are coming together. Okay, so this was the classification of protein, that is complete protein and an incomplete protein. Okay, now complete proteins. So what are the sources? In here just an image I have shown you. So complete proteins are those which will contain all the essential amino acids, right? So non vegetarian food sources मैंने आपको बताए थे. So all these foods, like even organ meats. अभी non vegetarian foods में muscle definitely it will contain complete protein, but all the organ meats, they will also contain complete protein. So जितना part उसका protein का है ना, they will contain complete protein. So here again milk is shown here. So milk and milk products, they will contain complete protein. Now यहाँ पे ना, अच्छा, will come to it. So incomplete protein, so these are the sources of incomplete protein. So यहाँ पे जो दिखा है ना, it is not paneer and milk, it is soya milk and tofu. Okay, image में जो आपको पनीर जैसे दिख रहा है, that is tofu and soya milk. So basically soybean is a kind of pulse, okay, but it contains a lot of protein rather than the other pulses and legumes. Okay, तो इसमें सोयाबीन में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं कि विच व्हेन प्रोसेस्ड, जब इसकी प्रोसेसिंग होती है तो वी आर गेटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स आउट ऑफ इट. सो हमें क्या मिल रहा है? मे बी सोया फ्लावर, वी आर गेटिंग सोया चंक्स, वी आर गेटिंग tofu, we are getting soya milk, right? So all this is derived from soybean. So it is a pulse again. So that also contain good amount of protein. So ये कितना प्रोटीन रहता है ना, that we will be learning when we will be doing our exchange list. Okay, so further classes जो अभी next module है हमारा, उसमें we will be learning different kinds of foods, food groups. Sorry, we will be learning about the food groups. We will be learning about which food contains what amount of calories, and everything will be doing in that session. Okay, so we are having here all pulses. So if you mix those pulses together, then we can get then our body can make a complete protein. Now इसमें भी ना, what you can do is like you can घर में ऐसे होता है ना कि maybe we are not getting time, or we are not many people also tell that ये अलग अलग मिक्स करना फिर बनाना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, टेस्ट इनकॉम्पेटिबिलिटी ये वो. So what we can ask people to do is we can ask them to prepare malt out of this. Okay, so आपने मटकी ऐड किया, that is moth beans ऐड किया, आपने मूंग ऐड किया, राजमा ऐड किया, देन मसूर दाल ऐड किया, उड़द दाल ऐड किया, एंड देन उसको थोड़ा भून के यू कैन मेक अ पाउडर आउट ऑफ इट एंड यू कैन प्रिपेयर रेसिपीज. सो दैट दोज रेसिपीज कैन बी एनी, like you can make idlis out of it, you can make dosas or utappas or just a chila,
राइट. सो बेसन का तो वैसे भी छीला बनता है, सो यू ऐड सम ग्राम फ्लावर टू इट, इट विल टेस्ट गुड ऑल्सो, राइट. You can now add a little bit of oats because oats is a cereal, but in order to get it also contains good amount of protein. So in order to get like good protein and this thing, then you can add it this way, राइट. सो ये सारी चीज़ें आप पेशेंट्स को काउंसलिंग करते समय बता सकते हो, बिकॉज एवरी टाइम इवन यू नो मेनी क्लाइंट्स ऑल्सो नो कि इसमें अच्छे प्रोटीन है, उसमें ये है वो है. व्हाट वी नीड टू टेल देम इज कि उनके रूटीन में वो किस तरीके से अपना हेल्थ जो है वो अच्छी तरीके से मेंटेन रख सकते हैं. ओके. सो ये थे एग्जाम्पल्स एंड यू नो द things about proteins. Now in further classes also we will be learning more about this thing. Now proteins. So now how proteins are digested, they are absorbed and metabolized in our body, that we will be learning through this video. Okay. So whenever we are taking proteins, जैसे मैंने आपको बोला था कि प्रोटीन लेने के बाद में इस डाइजेशन बिगिंस इन आवर स्टमक, राइट. ये पेट में इसका डाइजेशन शुरू हो जाएगा. ओके. एंड देन वो जो डाइजेशन है, वो जो एंजाइम्स है, ऑल दिस इज शोन ब्यूटिफुली इन दिस वीडियो. सो आई थिंक इट इज 5 minutes वीडियो. सो जस्ट yes, not even 5 minutes, it is 4.10 seconds. So 4 to 5 minutes. So just see this video. We will see it twice because this is very important to understand the metabolism of protein. Okay. This again I have taken from Google. It has nothing to do with the advertisement. It is only for the learning purpose. So just take whatever you need to take. Okay. Proteins are responsible for nearly all bodily and cellular functions, from structural proteins in bones, contractile proteins in muscles, transport proteins in blood plasma, to hormones, antibodies, cell receptors, ion channels, and enzymes that catalyze almost every chemical reactions in biological systems. Proteins are polymers of amino acids linked together by peptide bonds. Acha. An amino acid can... Just 1 second. So if you see here, so proteins, they are required for so many functions in our body. हम लोग क्या सोचते हैं कि प्रोटीन खाएंगे तो मसल्स बिल्ड होंगे, वेट लॉस होगा. We are only in that frame. But come out of it and understand that proteins are also required for other important functions. Like for example immunity, उसके लिए antibodies तैयार करने हैं, वो भी प्रोटीन है. Enzymes, many metabolic processes are happening with the help of enzymes only. So those enzymes are protein in nature. Hormones, different hormones, like body में बहुत सारे hormones है which are protein in nature. There are only 2 hormones that are non-protein in nature. आपको उनके नाम मुझे बताने हैं. Okay. So you need to study a little bit. You need to scroll on maybe Google and to find which 2 hormones they are not protein in nature in our body and they are derived from which other substance. Okay. ये भी आप देख लो. ठीक है. तो आपको फिर वो समझ में आ जाएंगी चीज़ें. बाकी के सारे ऑलमोस्ट 80% हॉर्मोन्स जो है ना, दे आर प्रोटीन इन नेचर. ओके. देन एंजाइम्स, देन गेटेड चैनल्स. सो हर एक सेल में ना गेट्स रहते हैं, नहीं तो सेल में कोई भी आएगा जाएगा, अपना ही घर समझ लो. इट इज़ नॉट लाइक दैट. इट हैज़ टू हैव सर्टन लिमिट ना, कि कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं. अदरवाइज दैट यू नो एनवायरनमेंट, दैट होम्योस्टेसिस विल नॉट बी मेंटेन प्रॉपरली. सो इसीलिए उसको कोई गेट्स है. सो दीज गेट्स विल बी ओपन ओनली फॉर द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय द सेल टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस. ओके. सो उनको हम लोग गेटेड चैनल्स बोलते हैं, आयन चैनल्स बोलते हैं. देन वी हैव रिसेप्टर्स. नाउ दीज रिसेप्टर्स आर फॉर द पर्पस दैट यू नो टू गेट दैट स्टिमुलस, कि चलो अभी प्रोटीन आया है, this receptor, it is sensing it, it is opening that ion channel. Okay. Or it is opening that insulin glucose gate, because it is sensing the glucose coming out of the coming near the cell. ठीक है. तो वो अंदर लेने के लिए ये एक सेंसर्स की तरह काम करते हैं. इवन दे आर प्रोटीन इन नेचर. डिफरेंट सेल्स लाइक हीमोग्लोबिन में जैसे ग्लोबिन फॉर्मेशन है, दे आर अगेन प्रोटीन्स, राइट. सो apart from the structural component of body will be your bones and your muscles, right. Your skin, your hair, your nails, these are all the structural component. तो हम लोग सोचते हैं कि इन्हीं के लिए सिर्फ प्रोटीन की जरूरत है. No,
proteins are also required for the other functions in our body. Okay. All bodily and cellular functions, from structural proteins in bones, contractile proteins in muscles, transport proteins in blood plasma, to hormones, antibodies. See, structural proteins in bones. So it is forming a structure. Contractile proteins in our muscles. So what is the function of our muscle? It is to contract and relax. So it has to have a specific protein structure. So they are called as contractile proteins. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स इन ब्लड. सो व्हाट आर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स? एक तो हीमोग्लोबिन है, फाइब्रिनोजन है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन. ये जो प्रोटीन्स है दे आर ऑल्सो परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन, राइट. सो ये जो प्रोटीन्स है, these are also kind of protein that needs certain good essential amino acids to be formed. Okay. Yes. Cell receptors, ion channels, and enzymes that catalyze almost every chemical reactions in biological systems. Proteins are polymers of amino acids linked together by peptide bonds. An amino acid consists of an amino group, a carboxyl group, and a unique side chain connected to a central carbon, the alpha carbon. Instead of being an extended chain of amino acids, a protein usually folds into a three-dimensional conformation that is critical for its functions. See. Oh. One second. Huh? Proteins, cell receptors, that catalyze almost. Proteins are polymers of amino. So proteins are polymers of amino acids. Means what? कि अमीनो एसिड एक साथ आ रहे हैं. जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स में देखा था, बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आके एक क्या पॉलीसैकेराइड बन रहा है. वैसे ही ये पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड. सो डिफरेंट अमीनो एसिड्स आर कमिंग टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोटीन स्ट्रक्चर. अभी ये क्या बता रही है? Amino acids linked together by peptide bond. So every two amino acids they are linked together by a peptide bond. इसीलिए उसको polypeptide chain बोला जाता है. Okay. An amino acid consists of an amino group, a carboxyl group, and a unique side chain. So amino acids they contain a nitrogenous compound that is amino group. ठीक है. हर एक अमीनो एसिड में ना एक अमीनो ग्रुप रहता है कि जिसमें नाइट्रोजन रहता है. नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दिस नाइट्रोजन? वी विल सी. Connected to a central carbon, the alpha carbon. Instead of being an extended chain of amino acids, a protein usually folds into a three-dimensional conformation that is critical for its functions. See. Oh. क्या हो रहा है पता नहीं. मुझे वो चीज़ आपको बतानी है. वन सेकेंड. सी आइडियली जब अमीनो एसिड्स एक साथ आ रहे हैं तो इस तरीके से चेन दिखनी चाहिए, है ना. बट इट डजंट लुक दैट वे बिकॉज इट इज बाइंडिंग इटसेल्फ in a proper consolidated structure, like it is round in structure and then Acid sequence. see. Of the as to 20 perform amino its acids function. that make up proteins, nearly half are essential, meaning the body cannot synthesize them and must get them from the diet. Animal proteins are usually considered high quality, complete proteins because they have similar amino acid composition as human proteins and can thus provide all the required amino acids. But a combination of a variety of plant foods may also do the job. Proteins in foods are digested in the stomach and small intestine by the action of stomach acid, which denatures proteins, and several enzymes that hydrolyze peptide bonds. Together they break down proteins into individual amino acids, which are then absorbed into the bloodstream and transported to the liver. The liver uses these amino acids to synthesize new proteins, most of which. ओके. अभी ये समझ लो, ठीक है. हम लोग प्रोटीन्स ले रहे हैं. नाउ प्रोटीन्स का क्या हो रहा है? डाइजेशन उसका कहाँ पे हो रहा है? स्टमक में. स्टमक में क्या हो रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सिक्रीट हो रहा है, राइट. नाउ दिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज अनबाइंडिंग दिस प्रोटीन. जो प्रोटीन का कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है उसको अनबाइंड कर रहा है. इट इज बिकमिंग अ सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर. नाउ अभी ये जो स्ट्रक्चर है ना, नाउ दीज अमीनो एसिड्स, ये जो राउंड एक बॉल है दैट इज वन अमीनो एसिड. सो दीज अमीनो एसिड्स दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर विद द पॉलीपेप्टाइड चेन. ठीक है. पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड यू कैन से. ठीक है. सो इस पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड पे ना HCl काम करता है. HCl उस पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है.
अपार्ट फ्रॉम HCl वी हैव पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन. ये 3 एंजाइम्स होती है कि विच इज सिक्रीटेड बाय दी स्टमक एंड दी स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टमक में से पेप्सिन निकल आ रहा है, HCl निकल आ रहा है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड इंटेस्टाइन्स में से ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन. इट इज ऑल्सो, दीज आर ऑल्सो दी पैनक्रियाटिक एंजाइम्स. ठीक है, ये तो ये एक साथ आके ना प्रोटीन के उन बॉन्ड्स के ऊपर वर्क करते हैं, उनको ब्रेक करते हैं, एंड दे ब्रेक these protein molecules into smaller polypeptides, and subsequently they are separated as an amino acid in our intestines. Okay, so during this process, जब ये process हो रही है, ये चीज़ है ना, जब मैं ये important है, clinically this is important because when this thing is happening, these enzymes and these hormones, when they are acting on the polypeptide chains to break them into amino acids, lot of water molecule, lot of ATPs are being utilized. So इसीलिए जब ये water molecules, when they are utilized in the breakdown of these pepsin breakdown of these polypeptide chains, इसीलिए हमें जब when we are taking very high protein diet, we feel more thirsty. Okay, and also this is a long process, it is not a short process कि मतलब कोई भी एंजाइम एक्ट हो रही है एंड दिस इजीली अमीनो एसिड्स आर बीइंग फॉर्म्ड. इट इज़ नॉट दैट वे. इट इज़ अ बिग प्रोसेस कि जहाँ पे जो हीट जो लिबरेट होती है ना, वो ज़्यादा लिबरेट होती है. सो वेन एवर वी आर टेकिंग अ प्रोटीन, हाई प्रोटीन डाइट, देर इज़ मोर हीट लिबरेटेड इन आवर बॉडी. ओके, ये हीट बहुत ज़्यादा लिबरेट होती है, जिसकी वजह से ना वी फील मोर हीट सेंसेशन व्हेन वी आर टेकिंग मोर हाई प्रोटीन डाइट. ठीक है. So now what is happening? This pepsin, trypsin, chymotrypsin, this is acting on these polypeptide chains and breaking them into smaller amino acids. Now these amino acids, they can be absorbed. बड़ा जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, they will not be absorbed by our intestinal villi. ठीक है, लास्ट टाइम हमने देखा था इंटेस्टिनल विलाई कैसा रहता है. फिर अभी इंटेस्टिनल विलाई से ये अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, दे एंटर इनटू दी ब्लड सर्कुलेशन, एंड वो सारे के सारे जो अमीनो एसिड्स है, दे एंटर इनटू लीवर. क्योंकि लीवर इज अ गेटवे चैनल, यू कैन से डिस्ट्रीब्यूटर. ठीक है, सब कुछ जो आता है वो लीवर में आता है पहले. इट फर्स्ट गेट्स डिटॉक्सिफाइड, लीवर एनालाइजेस इट, विच पार्ट ऑफ द बॉडी विल रिक्वायर विच काइंड ऑफ अमीनो एसिड, एंड इट सेंड्स इट अकॉर्डिंगली. ठीक है, तो वो इंटेलेक्ट लीवर में रहता है. सो नाउ दीज आर फ्री अमीनो एसिड्स, दे आर कमिंग टू लीवर. सो लीवर डिसाइड्स कि कौन सा प्रोटीन. अभी लीवर क्या करता है, दो चीज़ें करता है. लीवर में कुछ प्रोटीन्स बनते हैं. कौन से प्रोटीन बनते हैं? एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन. ठीक है, फाइब्रिनोजन, ये सारे जो ब्लड प्रोटीन्स है, ठीक है, ग्लोबुलिन, इट इज बीइंग फॉर्म्ड इनटू लीवर. तो लीवर अपना अपना काम शुरू कर देता है. बाकी के जो अमीनो एसिड्स है ना, दे आर सेंट इनटू द सर्कुलेशन फॉर डिफरेंट बॉडी फंक्शंस. ओके, तो वही इवन एंटीबॉडीज, एंजाइम्स, दे आर प्रिपेयर्ड इनटू लीवर. तो लीवर क्या करता है ना कि इन सारी चीज़ों को पहले बनाता है उन अमीनो एसिड से, एंड बाकी की जो अमीनो एसिड्स है, दे आर सेंट टू the different parts of our body. So what happens next, we will see. Which are plasma proteins. The liver all. Oh, what is happening? One second. Huh? Yes, तो अभी उन्होंने जो बोला ना प्लाज्मा प्रोटीन, सो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये वीडियो हम लोग बाद में वापस देखेंगे, तब आप है ना उसको ध्यान लगाकर वापस देखो. अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, सो बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट. इस वीडियो से सिर्फ आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आएगी. सो दैट इज वाई आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द वीडियो. ठीक है, अभी यहाँ तक आए थे, चलो अभी यहाँ से आगे देखते हैं. They have similar amino acid composition and can thus provide a variety of plant foods of stomach acid, which denatures proteins, and several enzymes that hydrolyze peptide bonds. Together, they break down proteins into individual amino acids, which are then absorbed into the bloodstream and transported to the liver. The liver uses these amino acids to synthesize new proteins, most of which are plasma proteins. The liver also distributes free amino acids to other tissues for synthesis of tissue-specific proteins. Proteins are synthesized based on genetic information of the cell, using the genetic code and regulatory signals. Each cell has a character. So proteins are synthesized based on the genetic information. मतलब कि जब अभी ये अमीनो एसिड जा रहे हैं, लेट्स से कि मसल में जा रहे हैं अमीनो एसिड्स, किसके लिए? प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने के लिए, या फिर किसी ब्रोकन प्रोटीन को रिपेयर करने के लिए.
तो ये जो प्रोटीन बनते हैं ना, दैट इज बीइंग डिक्टेटेड बाय द डीएनए ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल. ठीक है, मतलब जो मसल सेल है उसके डीएनए को पता है कि हमें किस तरह का प्रोटीन बनाना है, उसी तरीके का प्रोटीन, उसी तरीके के अमीनो एसिड का सीक्वेंस अरेंजमेंट उसी तरीके से बनेगा. सो दैट इज डिक्टेटेड बाय द डीएनए एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या, आपने सुना होगा ये वर्ड ट्रांसक्रिप्शन की वेयर वी ट्रांसक्राइब. ठीक है, कि जब एक लैंग्वेज में कोई तो बोल रहा है, वी ट्राई टू टाइप इट. ठीक है, now what is the same thing is happening in the cell also. फिर ये ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में दैट इज कोडिंग इज बीइंग फॉर्म्ड. मैसेंजर आरएनए है ना, वो मैसेज पहुंचाता है कि अभी इस तरीके का कोडिंग आपको चाहिए, मतलब इस तरीके के कोडिंग के हिसाब से हमें प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाना है. तो वो जो अमीनो एसिड्स है ना, वो अपने आप फिर सीक्वेंस अपना डिसाइड करते हैं एंड उस तरीके का प्रोटीन मॉलिक्यूल उस सेल में बनता है. सो इट इज सच अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. You understand? So it is not very easy to form a protein molecule in our body. So it has to undergo so many molecular changes. You see, you cannot even see a cell, right? And वो cell में इतनी सारी चीज़ें हो रही है कि it is just out of imagination कि मतलब how a protein molecule. हम लोग सोचते हैं कि चलो हमने डाइट में प्रोटीन ले लिया तो सेल में प्रोटीन बन गया and you know the things are being served. Though dietary intake of protein is essential, but उसके आगे ये प्रोसेसेस होना भी ज़्यादा उससे इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो अभी मसल का प्रोटीन बन गया. सेल हैज थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स, ईच सेल टाइप हैज अ स्पेसिफिक कलेक्शन. सो लेट्स से कि न्यूरॉन्स है हमारे ब्रेन के सेल्स, उसके लिए एक प्रकार के सेल्स चाहिए, उसके लिए एक प्रकार का प्रोटीन मॉलिक्यूल चाहिए, तो वो उसी तरीके के प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाएंगे. एक एंजाइम है, वो उसी तरीके से बनेगी कि जिस तरीके से उसका कोडिंग हुआ है, राइट. सो इस तरीके से एक सेल डिसाइड करती है व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल बनना चाहिए और व्हाट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ दोज अमीनो एसिड्स. ओके, characteristic collection of proteins specific to its functions. Body proteins are constantly renewed. Older proteins are broken down into free amino acids, which are recycled. They combine with dietary amino acids to make new proteins. Unlike carbohydrates and lipids, proteins cannot be stored. See, this is very important. So what she said previously कि जो प्रोटीन हमारे बॉडी में आ रहे हैं, जो अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में आ रहे हैं, तो जितने एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं ना, वो लिए जाएंगे. अगर मसल ब्रेक डाउन हुआ है तो उससे उसका रिपेयर होगा एंड देन द न्यूअर प्रोटीन मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म. सो दिस इज अपग्रेडेशन. So why it is necessary to exercise when you are taking a protein diet? Because you need to cause that wear and tear of your muscles in order to deposit newer amino acids, in order to form that muscle a stronger muscle. ठीक है, इसीलिए अगर आप बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो एंड यू आर सिटिंग इन वन प्लेस, मे बी आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, एंजाइम्स आपके अच्छे फॉर्म होंगे, योर ब्लड प्रोटीन्स वो अच्छी तरीके से बनेंगे, बट द क्वालिटी ऑफ योर मसल विल नॉट be as good as when you would have been exercised. Okay, so whenever you are taking a high protein diet, in order to maintain your body image, you also need to exercise yourself. ठीक है, so in order to build your body in a proper way. Now अभी है ना, how protein molecule is connected, protein metabolism is connected to glucose metabolism. तो यहाँ पे ये बताया है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द क्लिनिकल एप्लीकेशन अगेन. सो जो हम लोग बोलते हैं ना कि मतलब हाई प्रोटीन डाइट से वेट लॉस होगा, इट हेल्प्स इन वेट लॉस, बट यू नीड टू डू सर्टन थिंग्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. ओके, सो इट इज शोन इन दिस diagram or it is shown in this video. So please listen to it. Stored for later use. Once the cellular requirement for proteins is met, excess amino acids are degraded and used for energy or converted into glucose or fatty acid. Very important. When you are taking a very high protein diet, उसमें से जितनी ज़रूरत है बॉडी के लिए, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के लिए, बाकी के फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स के लिए, उतना तो यूटिलाइज हो जाएगा. अगर आपने बहुत ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा प्रोटीन्स लिए हैं, दोज अमीनो एसिड्स दे विल बी यूटिलाइज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ they will be utilized for the production of energy. अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, then it will get converted into glucose.
So can you imagine these pathways, how they are connected to each other? So कोई भी molecule, proteins are not stored in your body. Glucose is not stored in your body. What is stored in your body? Fats. So eventually, when you are taking excess of protein, they are remaining unutilized in your body. Those proteins are going to get utilized to form glucose, which eventually will get converted into fats. So that is very, very important. See, again we'll see this. Carbohydrates and lipids, proteins cannot be stored for later use. See, now listen. to Unlike this. carbohydrates and lipids, proteins cannot be stored for later use. Once the cellular requirement for proteins is met, excess amino acids are degraded and used for energy, or converted into glucose or fatty acids. See, Use of amino acids for energy production also converted into glucose or fatty acids. ठीक है? Excess amino acids they will be used for the purpose of formation of energy. एनर्जी मतलब हमें अगर कुछ लाइक कैलोरीज हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं तो उसके लिए वो यूटिलाइज होंगे, नहीं तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज और फैटी एसिड्स एंड गेट स्टोर्ड इनटू योर बॉडी. अगर ग्लूकोज में हुआ तो ग्लूकोज इवेंचुअली गेट कन्वर्टेड इनटू फैट्स. तो ये समझना बहुत ज़्यादा गलत है कि अगर आप ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हो तो यू विल बी यू आर एट द हाइस्ट हेल्थ. इट इज़ नॉट लाइक दैट. ओके, सो आपको ये चीज़ें जो हैं ये ठीक तरीके से समझनी है एंड इसको अंडरस्टैंड करना है. occurs when there is energy shortage, such as during prolonged exercise or extended. Use of amino acids for energy production also occurs when there is energy shortage, such as during prolonged exercise or extended fasting. Since there are no nitrogenous compounds in the energy production pathways, the first step in amino acid degradation is the removal of the amino group by deamination or transamination to produce keto acids. सी, अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दो सी आपको शायद से ये डिफिकल्ट लगे या फिर आपको ये चीज़ें समझ में ना आए, सो इट इज़ परफेक्टली फाइन. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू रिमेंबर दीज पाथवेज इन दैट सेंस. आई एम ओनली एक्सपेक्टिंग यू टू लर्न what is actually happening with our carbohydrate, proteins and fats. Okay, try to understand. That is it. You don't need to remember कि glucose से pyruvate हुआ, pyruvate से ये हुआ, वो हुआ. That is all fine if you don't understand. But you should know how these metabolisms are connected. So that when we are planning a diet, ऐसे नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा high protein diet दे रहे हो और बैठे हो कि अब ये protein weight loss होगा. No, the person has to do workout. Okay, in order to effectively utilize those proteins. ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम है, तो ये आगे हम लोग जैसे ये साइंस सीखेंगे यू विल अंडरस्टैंड इट. ओके, सो यस, यहाँ पे अभी उन्होंने क्या बताया कि नाउ व्हेन दीज अमीनो एसिड्स आर गेटिंग डिग्रेडेड फॉर द एनर्जी पर्पस. ठीक है, तो उस समय क्या होता है ना कि ये जो अमीनो ग्रुप है H2N, दैट इज एन अमीनो ग्रुप विच कंटेन्स नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये ना निकलता है उस अमीनो एसिड से. ये ग्रुप है ना, ये निकलता है. ओके, ये निकल जाने के बाद में नाउ वो जो अमीनो एसिड है उसका तो इट विल बी यूटिलाइज इन द प्रोसेस इन इट्स प्रॉपर फंक्शन, लेकिन जो बाकी का है ना उसका क्या होता है विल सी. नाउ कीटो, हाँ, इससे क्या होता है ना कि ये जो बाकी का ग्रुप है इससे कीटो एसिड्स तैयार हो रहे हैं. नाउ कीटो एसिड इज ऑल्सो अ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी इटसेल्फ. मतलब कीटोन्स जो है बॉडी में that is used for the energy purpose for production of calories. लेकिन उसके पहले क्या होता है ना ये हम देखते हैं. Some amino acids can be directly deaminated, while others must transfer their amino group to alpha-ketoglutarate to form glutamate, which is then deaminated to recycle alpha-ketoglutarate. Depending on their side chains, keto acids from different amino acids may enter the metabolic cycles at different points. They may be converted to pyruvate, acetyl-CoA, or one of the intermediates of the citric acid cycle. सी, अभी यहाँ पे क्या बताया कि जो मैंने आपको बताया था कीटो एसिड्स, तो अभी अमीनो ग्रुप निकल गया, कीटो एसिड्स बच गए. तो अभी कीटो एसिड्स हाउ दे विल फॉर्म एनर्जी, दे विल एंटर दिस पाथवे ऑफ ग्लाइकोलिसिस एट डिफरेंट पॉइंट्स. ठीक है, ये अलग अलग पॉइंट्स पे एंटर होंगे एंड फिर उसकी एनर्जी मेटाबॉलिज्म्स में दे विल पार्टिसिपेट. ओके, what happens to amino group? Let's understand. Some of these reactions are reversible. When amino acids are in short supply, citric acid intermediates can be aminated to create new amino acids for protein synthesis.
Deamination produces ammonia, which is toxic if accumulated. See, The liver deamination means removal of amino group. तो अभी इतने सारे, it is not only one protein or one amino acid that is getting deaminated. There are like number of amino acids they are getting deaminated, and when this deamination process is happening, this amino group, it produces certain toxins in our body. We'll see that. Ammonia to urea to be excreted in urine. It is forming ammonia. Extreme, which is toxic if new amino acids for protein synthesis. Deamination produces ammonia, which is toxic if accumulated. The liver converts ammonia to urea to be excreted in urine. Extreme diets that are excessively high in proteins may overwhelm the kidneys with nitrogenous waste and cause. अभी क्या बता रही है वो? नाउ इस अमीनो ग्रुप जो निकला हुआ है उससे अमोनिया तैयार हो जाता है बॉडी में. नाउ अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक फॉर आवर बॉडी इफ इट इज सर्कुलेटिंग इन आवर सिस्टम. नाउ इन ऑर्डर टू रिमूव दिस अमोनिया, व्हाट बॉडी डज, it cannot be removed ऐसे ही. It has to undergo some certain conversion. So ammonia, some ammonia, it is eliminated through urine, some gets converted into urea. Now ammonia and urea both are toxins to our body. ठीक है, अगर ये इतने बड़े toxins है ना कि literally it can damage kidneys, it can damage our brain also. Because in limited amounts it will not cross our blood brain barrier. जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं they do not cross that barrier so that our brain remains safe. Okay, but in this case when there is excess of amino acids and urea, वो जो blood brain barrier है ना वो भी टूट जाता है, and this ammonia it enters into our brain cells and it causes lot of toxicity जिसकी वजह से कॉमा एंड डेथ भी हो सकती है. ओके, सो अभी क्या हो रहा है ना, अभी नॉर्मली अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस कि व्हेन वी आर एट हेल्थ देन ऑल्सो अमोनिया एंड यूरिया इज फॉर्म्ड इन आवर बॉडी, बट इट इज एलिमिनेटेड इन फ्रॉम आवर बॉडी बिकॉज ऑफ द नॉर्मल फिजियोलॉजी दैट इज बीइंग सेट इनटू आवर किडनीज. ठीक है, तो अभी जब ये भी बफरिंग कैपेसिटी ऑफ किडनीज भी खत्म हो जाएगा ना, इट विल स्टार्ट डैमेजिंग आवर किडनीज ऑल्सो. सो फिजियोलॉजिकली एट हेल्थ all these toxins are eliminated. So you can just imagine if you are taking a very high protein diet, all the formation of this ammonia is also going to increase. Formation of urea is also going to increase. So who is responsible if this is not being properly eliminated from our body? So that is why you need to take proteins in your diet counted basis. Okay, so protein liberally कितना भी ले रहे हो, scoops ले रहे हो तो muscles build होंगे. It is not like that. Okay, it can have deleterious effects on your body if you're taking it in more quantities. Understood? Okay, so abhi aage renal damage. Yes, so this was the metabolism of protein. I would like to see this I would like you all to see this metabolism again and understand the the consequence of very high protein diet and very low protein diet also. Obviously if you are taking very less protein then the normal functions जो है वो भी नहीं होंगे. ठीक है, सो ये वापस से आप देख लो, ये बहुत ज़्यादा इंटरप्ट करके मैंने आपको ये बताया था बिकॉज आई वॉन्ट यू ऑल टू अंडरस्टैंड द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन डिटेल. ठीक है, एंड कम आउट ऑफ दीज मिथ्स एंड थॉट्स के जो हम लोगों ने प्री एज्यूम करके उसको रूल्स ही बना दिए हैं अभी कि हाई प्रोटीन डाइट ले लो करके. ठीक है, सो ये शांति से थोड़ा देखो, इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग वीडियो. एक बार देखो, अंडरस्टैंड इट एंड देन वी विल स्टॉप दिस क्लास. Yes. Proteins are responsible for nearly all bodily and cellular functions, from structural proteins in bones, contractile proteins in muscles, transport proteins in blood plasma, to hormones, antibodies, cell receptors, ion channels, and enzymes that catalyze almost every chemical reactions in biological systems. Proteins are polymers of amino acids linked together by peptide bonds. An amino acid consists of an amino group, a carboxyl group, and a unique side chain connected to a central carbon, the alpha carbon. Instead of being an extended chain of amino acids, a protein usually folds into a three-dimensional conformation that is critical for its functions. The structure forms as a result of interactions between the side chains of amino acids, and is thus dictated by the amino acid sequence.
Of the 20 amino acids that make up proteins, nearly half are essential, meaning the body cannot synthesize them and must get them from the diet. Animal proteins are usually considered high quality, complete proteins because they have similar amino acid composition as human proteins and can thus provide all the required amino acids. But a combination of a variety of plant foods may also do the job. Proteins in foods are digested in the stomach and small intestine by the action of stomach acid, which denatures proteins, and several enzymes that hydrolyze peptide bonds. Together they break down proteins into individual amino acids, which are then absorbed into the bloodstream and transported to the liver. The liver uses these amino acids to synthesize new proteins, most of which are plasma proteins. The liver also distributes free amino acids to other tissues for synthesis of tissue-specific proteins. Proteins are synthesized based on genetic information of the cell, using the genetic code and regulatory signals. Each cell has a characteristic collection of proteins specific to its functions. Body proteins are constantly renewed. Older proteins are broken down into free amino acids, which are recycled. They combine with dietary amino acids to make new proteins. Unlike carbohydrates and lipids, proteins cannot be stored for later use. Once the cellular requirement for proteins is met, excess amino acids are degraded and used for energy, or converted into glucose or fatty acids. Use of amino acids for energy production also occurs when there is energy shortage, such as during prolonged exercise or extended fasting. Since there are no nitrogenous compounds in the energy production pathways, the first step in amino acid degradation is the removal of the amino group by deamination or transamination to produce keto acids. Some amino acids can be directly deaminated, while others must transfer their amino group to alpha-ketoglutarate to form glutamate, which is then deaminated to recycle alpha-ketoglutarate. Depending on their side chains, keto acids from different amino acids may enter the metabolic cycles at different points. They may be converted to pyruvate, acetyl-CoA, or one of the intermediates of the citric acid cycle. Some of these reactions are reversible. When amino acids are in short supply, citric acid intermediates can be aminated to create new amino acids for protein synthesis. Deamination produces ammonia, which is toxic if accumulated. The liver converts ammonia to urea to be excreted in urine. Extreme diets that are excessively high in proteins may overwhelm the kidneys with nitrogenous waste and cause renal damage. Cause renal damage. Okay. So I hope ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई है related to protein metabolism. So whatever we have done till now, you have understood. So it was the about the proteins, इसका classification, the classification of amino acids, classification of protein, and then we learnt about the complete and incomplete proteins and their sources. Okay, and obviously the metabolism, which you cannot afford to forget. Okay, so again revise all these things, read, go through the books and try to understand. Okay, why proteins are required in our body. It is not that कि protein खाएंगे तो weight loss होगा, ये होगा. This is all myth. Okay, you need to have a very good balanced diet in order to lose weight or even gain weight or to have an optimum health, I would say. Okay, so this was for today. I hope you have enjoyed the class. So we have ended up with the second module. Okay, and I'll come up with the third module in the next class, which will be related to different kinds of foods and their calorific values. So till then, have a nice day. Take care everyone. Eat all healthy foods. Thank you very much. Bye bye.